Hello everyone. In this video we will learn how to find the largest among the three given numbers. So we will use three different and easiest method to do so. So let us begin with method 1. Method 1 says we will use if statement here. So include standard input output dot header file यहाँ पे लिख देंगे. फिर int main function we will define our variables. So we are taking n1, n2, n3. They are the three different number we will take from users. सो हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन में लिखेंगे कि एंटर द थ्री डिफरेंट नंबर्स और एक एक करके वो तीनों नंबर्स को हम लोग कॉल कर लेंगे. सो एंटर थ्री डिफरेंट नंबर्स. सो यूज़र विल एंटर द नंबर हियर और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पे वो उस नंबर को प्रिंट कर देंगे. सो वी विल स्कैन एफ मीन्स वी विल रीड दैट नंबर्स. सो वी विल यूज़ मॉडुलस 1f क्योंकि डबल लिया था तो हम लोग 1f का यूज़ करेंगे. अगर फ्लोट रहता तो सिर्फ f यूज़ करते हैं. हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नंबर्स कैन बी इन डेसिमल्स. सो हम लोग डबल लेना ज़्यादा यूज़फुल होगा. सो वी विल देन रीड ऑल द थ्री नंबर्स मॉडुलस n1, n2, n3 and let's go for the cases. So if n1 is means the user ने जो n1 डाला, if that n1 is greater than both n2 and n3, ये केस में हम लोग क्या करेंगे, let us look. So if n1 is greater than both n2 and n3, we will say that n1 is the greatest number or the largest one among all the three. So if statement हम लोग किस तरह से लिखेंगे, we will see now. So if n1 is greater than or equal to n2, and we are using two ampersand here, ठीक है, and n1 is greater than equal to n3. अगर n1 n2 और n3 दोनों से बड़ा है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे. तो हम लोग प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ. तो n1 को हम वहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट एफ. और हम लोग डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट लेंगे इसलिए .2f हमने यूज़ किया. इज़ द लार्जेस्ट वन मीन्स प्रिंट हो गया आएगा कि n1 लार्जेस्ट नंबर है. सो n1 इज़ लार्जेस्ट नंबर. So now we are looking for the next condition कि if n2 is greater than both n1 and n3, both n1 and n3. Here is ampersand here, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया. आई एम रिकॉर्डिंग आफ्टर टाइपिंग, सो ampersand है वहाँ पे. So we will take the if condition as if n2 is greater than or equal to n1 and 2 ampersand here, n2 is greater than equal to n3, then the print statement will look as printf n2 is the largest number and we will call n2. Okay, modulus dot 2f is the largest number, is the largest number and we will call n2. ठीक है. Now let us look for the third condition. What if n3 is greater? So उस सिचुएशन में आउटपुट क्या होगा? So if n3 is greater than both n2 and n1 or n1 and n2, n3 is the largest. So if condition look like if n3 is greater than equal to n1 and n3 is greater than equal to n2, we will print %.2f is the largest number, means n3 will be the largest number here. You can read as percent modulus whatever is the largest number. and ये जो %.2f है इसके बदले क्या प्रिंट होगा वहाँ पे, n3 का वैल्यू. सो दिस वॉज द सिंपल इफ़ स्टेटमेंट से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए. एंड फाइनली वी विल रिटर्न 0 सिंस वी टुक इंट मेन.
सो अब हम लोग आउटपुट देखते हैं, एंटर 3 नंबर्स, तो 58, 89 एंड 56. सो एज वी कैन सी 89 इज़ द लार्जेस्ट. एक और आउटपुट देखते हैं, एंटर 3 नंबर्स, लेट्स से 89, 36 and 95. So 95 will be the largest number. You can experiment and try various output once your code gets successfully executed. So ये आपका practice अच्छा करेगा. So now let us take some larger numbers. Yeah, you can comment what is the limit or the maximum number we can write in double type of data types. So this is the one more example. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. So enter 3 numbers, 3 different numbers, so 22, 55, 66. So 66 is the largest. So if we enter same numbers, what output we will get? Comment करो. Enter 3 different numbers, again we will see one more example. So let us enter, one second, let me go up. So enter 3 different numbers. Let's say now we can take negative numbers and see what happens. So minus 89.55, minus 9.58, and let's say 62. So 62 it seems is the largest. Yeah. So this was a simple if condition से हम लोग लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे. नाउ मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हुए हैं कि जस्ट टू check what things or what all output we can get. So this time I am taking two same numbers, so what I am getting 2 times the 0 is largest, 0 is largest. So you can experiment like this. So let us now look for the method number 2. So method 2 is using if else ladder. Here also we will write header file first, hashtag include standard input output.h. we will take int main. So inside the main our body of the code comes. So again the same data type double, and we will define our variables n1, n2 and n3. Then we will take those n1, n2, n3 from the users. So printf enter 3 different numbers, and so we will now print, let's say remove that comma. So scanf we will read those n1, n2, n3 which were entered by users. So again we are taking 1f since we taken double data type, and we will now read those numbers. So here the condition of if else is quite different from simple if statement. Condition here remains the same if n1 is greater than both n2 and n3, n2 and n3, then n1 is largest among those three. So अभी if else का यूज़ कैसे किया जाएगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे. if n1 is greater than equal to n2 and n1 is greater than equal to n3, ये सेम स्टेटमेंट होगा जो पहले हमने लिखा था. तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि n1 is the largest number. So we will take only 2 decimal after the number or point. So n1 is the largest, largest, largest number. So comma n1. In this condition, so अगर n1, n2 और n3 से बड़ा नहीं रहा तब हम लोग क्या करेंगे. सो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में जाएंगे. इफ n2 is greater than both n1 and n3, then we can say n2 is the largest number. And so we will take the if condition here. So here comes the logic. लास्ट में हमने if करके 3 if कंडीशन लिखा था, बट हियर वी विल टेक लूप. सो लैडर इसीलिए इसको if else लैडर कहा जाता है. if those condition, if n1 condition is not satisfied, then means else if we will look n2 is greater than n1 or n2 is greater than equal to n3,
then we will print f n2 is the largest number. So यहाँ पे instead of writing 3 times if we will simply use if else ladder. If this condition is true, else if this condition is true. So this तरह से if else looks. अगर ये दोनों condition satisfy नहीं हुए, then we will look for the third condition. If both the condition of above are false, then automatically we will say that n3 is the largest. So else we can say printf n3 is the largest number. So यहाँ पे हमने एक condition को avoid कर दिया directly कि n3 is greater than equal to n1, n3 is greater than equal to n2. So if else ladder कुछ points को हमको reduce करके दे देता है, और इसलिए simply writing if statement 3 times we can use if else ladder and it will reduce our one step. So return 0 since we take an int main. So let us compile this and look for the output. आउटपुट सेम ही रहेगा, तो आउटपुट देखते हैं. So after compiling we got, so after compiling the output is like this. Enter 3 different numbers. We will enter 89, 56 and let's say -8. So 89 is the largest number. आउटपुट सेम ही रहेगा, बस मेथड से क्या होता है हम लोग के स्टेप्स कम हो जाते हैं. सो एक बार और ट्राई करते हैं. -8 -8.5689 और एक और लेते हैं 8. सो 8 इज द लार्जेस्ट नंबर. सो यू कैन ट्राई वेरियस डिफरेंट आउटपुट टू गेट द रिजल्ट. सो लेट्स से 0.25 एंड व्हाट टू टेक. हाँ ये देख लिया. फिर हम लोग अभी इसमें एक और देखते हैं 0.25. नेक्स्ट नंबर लेट्स से व्हाट आई एम सर्चिंग, आई डोंट नो. -5.89 and the third number is 0.96. So the output will 0.96 is the largest number among these three. So this was a simple if else ladder. So this was method 2. और method 1 में हमने देखा कि 3 if statement लिखे थे और if else ladder वो पूरा एक स्टेप ही कम कर देता है. So let us now look for method 3. ये और भी easy है. इसको कहते हैं using nested if else. nested if else क्या होता है हम लोग इस कोड के माध्यम से देखेंगे. सो हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच जो कि हेडर फाइल है, और इंट मेन के अंदर अपना पूरा कोड का बॉडी आता है. सो अगेन द सेम डबल डेटा टाइप एंड वी विल डिफाइन अवर वेरिएबल्स n1 n2 n3. सो प्रिंट एफ हम लोग यूज़र से 3 डिफरेंट नंबर्स को इनपुट करवाएंगे. सो एंटर 3 डिफरेंट नंबर्स एंड वी विल read those 3 numbers using scanf function. So again we are taking 1f since it is a double data type and ampersand n1 n2 n3 to read those entered values. So now we will look how the nested if condition work. So first of all, if n1 is greater than n2 हम लोग इसके अंदर लूप में जाएंगे और एक और कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n1 is greater than equal to n3. If these both conditions satisfied, we will print, come down, and we will print here that n1 is the largest number. If both this nested if condition satisfied, we will write n1 is the largest number. So if n1 is not the largest, what can it be? So we can say else
printf so if n1 is not greater than n3, if अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो else we will print n3 is the largest number. पॉइंट के बाद 2 इसलिए लिया क्योंकि हम लोग डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट लेंगे, ज़्यादा नंबर बड़ा नहीं करना है. सो वी विल टेक n3 एज द लार्जेस्ट नंबर. सो इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2 तो हम लोग एक और अंदर कंडीशन में आएंगे, और अगर n1 n3 से भी बड़ा हो तो हम लोग n1 को बड़ा घोषित कर देंगे, अगर नहीं तो फिर n3 बड़ा रहेगा. तो ये इफ़ एल्स कंडीशन को क्लोज करके हम लोग नया नेस्टेड इफ़ ले रहे हैं कि एल्स अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो गया तो एक और एल्स के अंदर हम लोग नेस्टेड इफ़ करेंगे कि इफ़ n2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n3. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ सो वी विल प्रिंट n2 printf n2 is the largest number, means percentage dot 21f or modulus is the largest number and we will call n2. So this is a magic of nested if else condition कि हमारे बड़े steps automatically reduce होके simple छोटे छोटे conditions में आ गए. So if n2 is not greater than n3 then we will print n3 is the greater. दो condition होंगे, एक true होगा तो एक false होगा, एक false होगा तो एक true होगा. This is the simple if else statement. कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये बहुत इजी है. पॉज करो, अच्छे से समझ लो कोड को, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, देन यू विल लर्न समथिंग. सो दिस वाज द कोड. सो अभी हमने इंट मेन लिया था तो हम लोग रिटर्न 0 करेंगे, देन वी विल रिटर्न 0. सो लेट अस नाउ लुक फॉर द आउटपुट. हमने तीनों केस देख लिए, इसका आउटपुट देखते हैं. आउटपुट सेम रहेगा एज बिफोर. सम गिव स्पेस ताकि आउटपुट अच्छा दिखे. यहाँ पे भी एक स्पेस कर लेते हैं एंड लेट अस कंपाइल द कोड अगेन. सो आफ्टर कंपाइलिंग एंटर 3 numbers, लेट्स से 12, 15 and -8. So 15 is the largest number. Output will remain same. बस कोड के स्टेप्स रिड्यूस करने के लिए हमने 3 अलग अलग मेथड यूज़ किया. जो मेथड आपको अच्छा लगे, इजी लगे, आप वो मेथड से करिए. सो यहाँ पे हमने 3 नंबर एंटर किया, 10, 20 एंड 10,000. तो 10,000 इज़ द लार्जेस्ट. सो लेट अस टेक डेसिमल एंड नेगेटिव नंबर्स. तो -9.36, -9.37 and -9.2. So -9.2 is the largest number. So you can try various such outcomes to test your code properly. So this was a method 3. Method 2 using if else ladder, and this is the method 1 जो कि थोड़ा लेंदी है बट बेसिक्स के लिए, बिगिनर्स के लिए ठीक है. So happy learning.